हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक की, विच इज़ रिगार्डिंग व्हेन इज़ अ स्टॉक अ बाय और अ सेल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स फर्स्ट कि इट डज नॉट मैटर बिजनेस में पहले क्या हुआ है। यू ओनली हैव टू लुक एट आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होने की एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज मार्केट ओनली केयर्स अबाउट आगे क्या होगा। एंड बिकॉज पीछे जो कुछ भी हुआ है वो सबको क्लियरली पता है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट टू मेक मनी ऑन हाइंडसाइट. So first of all, a pretty big misconception कि there is a thing called as a hold. See, analyst can say buy, sell, or hold, but practically a hold does not make any sense in most cases. Since see, let's see what a hold means. So a hold means कि अगर किसी के पास shares already है तो you tell them to stay in the stock. But अगर किसी के पास नहीं है तो you say कि don't enter the stock. But fundamentally, there is a conflict in your opinion, क्योंकि in both cases their capital will be at risk in the same opportunity. सो अगर इतनी अनसर्टिनिटी है, इतना रिस्क है अपॉर्चुनिटी में, इतनी अनक्लैरिटी है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी, राइट? व्हाट्स द मोस्ट लाइकली आउटकम? एंड बहुत बार देयर इज नो वे टू फिगर आउट, राइट? तो उस अनसर्टिनिटी में why would someone who already has their capital be inclined to stay जब बाकी लोगों को तुम मना कर रहे हो कि तुम अपना पैसा मत डालो? सो एथिकली एज वेल अ होल्ड डज नॉट मेक एनी सेंस. तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द हाइंडसाइड बायस कि जो स्टॉक प्राइस वाइज जो पहले हुआ है, पीपल एक्चुअली एंकर देयर थॉट्स ऑन दैट टू फॉर्म एक्सपेक्टेशंस कि आगे क्या होगा, विच इज मोस्टली रॉन्ग. सो जस्ट बिकॉज एक स्टॉक गिरा है डज नॉट मेक इट अ बेटर डील इफ जो अंडरलाइंग अपॉर्चुनिटी है दैट इज डिफरेंट. सो जस्ट बिकॉज एक स्टॉक गिरा है, लेट्स से पहले पहले स्टॉक 100 रुपीज़ का था, लाइक 100 करोड़ की मार्केट कैप थी. नाउ इट्स 90. सो जस्ट बिकॉज वो 100 से 90 का हुआ है डज नॉट मीन कि इट इज़ चीपर. बिकॉज इन मोस्ट केसेस जब सिग्निफिकेंट फॉल आता है स्टॉक में, a common reason is, let's say, जो growth rate थी earnings की, that was maybe at 20% earlier and now it's at 10. So even though 10% price कम हुई है, but because of a different opportunity altogether, uh, actually stock 100 करोड़ की मार्केट कैप पे सस्ता था एंड अभी 90 CR की मार्केट कैप पे इट्स अ मोर एक्सपेंसिव स्टॉक टू होल्ड. और सेकेंडली आई थिंक a very key concept is कि the crowd is not stupid, at least most of the times. So I get the fact कि किसी भी bull market के peak पे या bear market के bottom पे you can easily tell कि हाँ, in hindsight कि the crowd was not so wise, but most of the time the crowd is pretty smart. And if the stock is falling like anything, so why do you think without doing a proper research on the stock, which is better than बाकी जो लोग sell कर रहे हैं, why do you think कि you know something more about the stock than them, और कि तुम बस उनसे ज़्यादा होशियार हो, है ना? Also, I have seen many people deriving pleasure कि बाकी सब गलत है and मैं सही हूँ, right? And that should never be the goal. The goal is always just to make money. Honestly, it is more peaceful to make money when you are with the crowd. You don't have to second guess yourself इतना ज़्यादा. You should not derive pleasure either ways कि crowd के साथ हो या against हो, it should not make a difference, right? The goal is just to make money without any biases. So just to explain, let's take the example of any stock. This the name is not important, right? So it's Ethos and it's currently at this price, right? So let's say the your research and everything, it gives you the expectation that the stock should move higher to, let's say, 5,000 in the next year. So if that is the thesis, and that was the thesis based on the information available इस point पे और इस point पे और इस point पे, तो all throughout this stock was a buy, right? And अभी भी it's a buy, and पहले भी था गिरने से पहले. But if गिरने के बाद some new information turns out कि let's say GST increase हो रहा है on luxury watches or something like that, so that affects your thesis future की.
एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सपेक्टेशन थी दैट कुड चेंज टू मे बी समथिंग अनसर्टन जो तुम फिगर आउट नहीं कर सकते मे बी, और इफ कर सकते हो इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। तो फिर इवन इफ समवन बॉट इट यहाँ पे इस हाई पे, व्हेन इट वाज अ बाय बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जो तब तक थी, he should still like just get out अभी when he does not know कि आगे क्या होगा, है ना? So this was a buy at a higher price and it's a sell at a lower price. But these things happen because जो opportunity है that does not remain the same. And जितना जल्दी लोग की realize करें ये चीज़ when it happens to them, जो loss का amount होगा that will be 20-30%, right? That's how much it takes to ऐसे identify a major move in the stock. But if you fail to identify that and अपने bias में लगे हुए हो तो you'll probably lose 50, 60, 70%, and getting out of that is very hard. A common question is how do I know where it will go in the future, right? So for that you have to think in probabilities. The first thing is to accept कि anything can happen, because जो company है that won't be the same company it is today. Like it won't be the same company tomorrow. Once you realize this and actually accept this fact, then you won't form ऐसे very strict views. So I've seen बहुत लोग ट्विटर पे एक कंपनी के बारे में कुछ व्यू देते हैं, right? And everyone sees the post. And now, if things change in that stock, they will not sell it just because दुनिया को बोल चुके हैं कि अच्छी opportunity थी. So to avoid this, one can simply not tell any of their friends what stocks they hold or they are bullish on, क्योंकि बोलने से ये एक बायस ही क्रिएट होगा एंड एक एंकरिंग इफेक्ट क्रिएट होता है व्हेन खुद को गलत बोलने में लोगों को एटलीस्ट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, इवन दो दैट कुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, है ना? अगर if a stock is going to zero, so getting out as soon as possible is the best thing, even if it means admitting you are wrong. Or getting out at the right time is like more than 50% of the returns in any good portfolio. So big wins will always happen, but the way to avoid big losses is to accept the fact कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, and to not get fixated on any information. So guys, that was it for this topic. The main thing here is that there is no hold. A stock is either a buy or a sell. It could be a hold sometimes, but वो सिर्फ ऐसा होगा कि let's say you have an opportunity A and an opportunity B, and तुम already A को own करते हो, right? So switching to B is not a good thing अगर दोनों opportunities almost same है तो. Then A is a hold for you specifically in context of B, क्योंकि A से B में switch करने में you'll have to incur transaction cost and tax cost, तो उस context के अंदर you can say a stock is a hold. But जैसे analysts just go around saying कि this stock is like 10 people say it's a buy, right? 10 people say it's a sell, 2 people say it's a hold. So those 2 people are, I don't know what kind of analysts they are, honestly. And why would you ever use the button of hold? कि किसी के पास है तो उसको मत बेचो, बट you're also telling कि कोई नया पैसा मत लगाओ इसमें जिसके पास नहीं है. So that is not honest. The next video will be on a business model. It's a hospital company. So I'll explain how to analyze business models using that example, and we'll also analyze थोड़ा सा normally company का and how it's a unique company compared to जो बाकी hospitals हैं in the listed space. So that's it, guys. I'll see you in the next video.